नमस्कार। उनका उद्देश्य इस दिन के पीछे है कि एक दिन पूरे साल में ऐसा भी हो जब हम अपने धर्म, जाति, अपनी पूजा, प्रेयर, अरदास, दुआओं उनसे ऊपर उठें। जब सब ये दुआएं, पूजा, प्रेयर्स, अरदास सब मिल जाएं और वो हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए, इस संसार के सभी लोगों के लिए, जब वो हाथ जोड़ के वो सब प्रार्थनाएं शुरू हों तो उनका मानना है कि वो एक चमत्कार, एक मिरेकल होगा। कृष्णा गुरुजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 11 अगस्त को ग्लोबल हीलिंग डे है। आप अपने आप को हील कीजिए, अपने लव्ड वंस को हील कीजिए और जितने भी लोगों को आप हील करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे टू डू द हीलिंग, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट और अगर हम ह्यूमैनिटी को प्राप्त करते हैं तो डेफिनेटली डिविनिटी विल बी आवर्स, गॉड विल लिसन टू अस। सो आई विश कृष्णा गुरुजी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हिज टीम एंड let us celebrate Healing Day on the 11th of August. God bless you guys. Hello everybody, this is Rakhi from Hong Kong and I am part of the Divine Astro Healing by Krishna Guruji.
I first of all apologize to Guruji for not being there on the Global Healing Day, but I also want to congratulate him that he has taken the initiative to heal globally anybody who is in pain, who is in difficulties, can go to Guruji, can call him up 24/7 any time of the day. He is a very selfless person, and you can call him anytime, 24/7, any time of the day or night, and get healing if you have any ailments, problems, difficulties. He is such a great personality that we are really lucky and blessed to have him. I am one of the members, participants of the Divine Astro Healing Group, and I really consider myself lucky to be in the guidance and care of Guruji. And I wish him all the very best of luck in this endeavor. Let us all join and pray together for the welfare of the whole mankind. He teaches you not only to heal yourself, but also to any family member, whether they are near or far. Healing processes. By his divine vibrations and help, we can also become one of his participants. Thank you so much for listening to me. Namaste. I'm Bala from Perth in Australia. I'm part of the Divine Astro Healing Group, and I've participated in the Level 1 and Level 2 programs. I first congratulate Krishna Guruji on the World Healing Day initiative and urge everyone to participate and get the benefit of collective prayer and healing. I first came to know of Krishna Guruji through the Saptarishi astrology site, and I took his healing. Last year, when I heard that Krishna Guruji was coming to Perth in Australia, I was overjoyed. I met him, and I can tell you that he is one of the most genuine and kind-hearted souls you will meet. I once again urge everyone to participate in the World Healing Day and get the benefit of collective prayer and healing. Thank you. नमस्कार, मैं पंडित दिनेश सेमल्टी शास्त्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कुआलालंपुर मलेशिया से श्री कृष्ण गुरुजी जो 11 अगस्त को ग्लोबल हीलिंग का जिनका कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसा इंसान बहुत कम देखने में मिलता है जो बगैर किसी स्वार्थ के सब लोगों की दिन रात सेवा करने, हीलिंग देने में कभी भी संकोच नहीं करते। ईश्वर इस कार्य को और अच्छा बनाए और आपको और शक्ति दे जिससे सब लोगों का भला हो सके। जय श्री कृष्ण। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तुभं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोति विसीद सादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। सर्वप्रथम पहला पल है मेरे जीवन का जब मेरा परिवार, मेरा कार्यकाल, ऑफिस के लोग, मेरे गुरु परिवार के लोग और मुझे आध्यात्म से जोड़े लोग, समस्त लोग एक मंच पर एक साथ हैं। देखिए, मेरे बारे में आपको बहुत कुछ बोला गया, यहां से हर ने व्यक्ति ने अलग अलग भाव बोले। वही दोहराना चाहूंगा कि मैं आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर एक है कि उस ऊपर वाले ने कुछ मुझे ब्लेस किया है कि कुछ अलग सोचने की कला। अपने जीवन को छोड़
कुछ साथ में जोड़ने, किसी और के बारे में कुछ सोचना, सब लोगों में वो चीज उपस्थित है। आज का दिन 11 अगस्त ग्लोबल हीलिंग डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी भावना के साथ जो मेरी जर्नी हुई अतीत से लेकर आज तक, जो भी संघर्ष, परिवार का सहयोग मेरे लिए सर्वोपरि रहा। कोई भी रिश्ते, समस्त रिश्तों से मुझे भरपूर प्यार मिला, समस्त, और मुझे मिला मैं बगैर अपेक्षा के कि कोई मुझे प्यार मिला, मैंने किसी को प्यार दिया तो मुझे कुछ मिले। यात्रा प्रारंभ रखी। I was employed in factory wherein I was looking towards human resource, जहाँ पे जो वर्कमैन थे उनकी वाइफ की जो प्रॉब्लम होती थी वो लेकर आते थे। वाइफ कभी आ रही हैं काउंसलिंग के लिए, मैम पूरा पैसा रख लेते हैं, घर तक आता नहीं है, और पैसे का सिर्फ एक ही काम होता है, या तो वो शराब में चला जाता है या तो वो तम्बाकू में चला जाता है। ऐसे में जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जीवन शैली का आगे क्या होगा, हम लोग परेशान थे। हमें लग रहा था कि मोर देन वर्किंग ऑन टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्टिविटी, we need to heal themselves, we need to bind them to the spiritual power. So we decided, हमें पता चला, पर सर तब LIC में होते थे अभी भी हैं, तो फ़ोन लगाया एंड पहले तो मिले, फिर प्रॉब्लम डिस्कस की कि शराब तम्बाकू ये सब छोड़ नहीं रहे हैं, और ऐसे 400-500 लोग हैं जिनके घर में परेशानियां हैं। देन टाइमिंग, ऑफिशियली आप कैसे ऑफिस और इसमें कैसे जस्टिस करेंगे, लेकिन जब स्वतः ही एक भावना होती है ना कि खुद से ज़्यादा मैं दूसरे के लिए अगर थोड़ा भी कुछ कर जाऊं, वो सर में दिखे। 7:30 बजे रेडी, 7:45 बजे सेशन स्टार्ट, 10 o'clock फिनिश। दूसरे दिन के लिए उसी दिन सभी लोगों की डिमांड, सर अब नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं। ये उनकी फीलिंग थी। जो लोगों को सालों लग गए तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़ने के लिए, वो उस दिन डस्टबिन में प्रण लेकर गए और छोड़ के गए। So on behalf of Dubai, we met Krishna Guruji first time when he visited us in the month of March this year, and we had 2 days level 1 course there. So there were about 30 people attended that event. From there, whoever attended that, so it takes us to a level where we can touch what we're meant for. You know, our life mission. That life mission, all of us, we have it, whether we know it or not. What Krishna Guruji did in this 2 days course, that it opened that particular valve in us so that we get connected to that divine flow through which we are empowered and pass on that healing energy to all others, to the humanity. Even we don't know to whom are meant for receiving that. Only what we can do is offer ourselves to clean ourselves, to make it worthy of receiving that grace, so that it flows automatically, pass through us and reaches to the others. That is, I think, the best way we can, because, you know, Krishna Guruji also mentioned that it is not chargeable. Not chargeable in monetary wise, but as a Guru Dakshina, what best we can do is to offer the teaching and learning to others, to heal others, and that way, I think it is the best way to give the Guru Dakshina back to Krishna Guruji and be the part of the divine. Thank you. I also don't know how I ended up here. About a year ago, I had met Krishna Ji, and after seeing his video on YouTube, I was having some physical health problems, and I said, okay, let me just try and call. I've never heard of somebody doing healing without charging any money or having some type of service or something offered with that. And when I spoke to Krishna Ji, I immediately had a very deep connection to him, as if I've known him for a long time, maybe lifetimes.
And we would just, speak to each other on the phone. Sometimes even healing didn't take place, but we would just have conversations about different things, and became very close. And he helped me quite a bit with many of my physical ailments, for which I probably wouldn't be here today if I didn't have his kripa. And many of my family members also had health ailments that he had helped with. And I had just had this thought that I wish I can do that for others. It was just a very simple wish, this feeling it in myself and being healed in so many ways. I said, I would love to do that for other people. And he said, you have to come. You have to come on August 11th, and we will give you the chance to be able to do that for others. And I'm so grateful for that. Thank you. I don't have much to say, but now as Guruji said that there must be some divine power who has brought me in here, so I truly believe in that. And obviously, the grace of Mahakal. And more than that, Guruji, it's you, your gracing, and that is something which since I met you or got to know about you, I didn't have a physical problem or mental problem, as I have been hearing on YouTube videos, people have been suffering, but I just got a feeling that somehow I need to be associated with Guruji, and I think probably it's some divine power, which we got connected, and I'm being blessed. So it's I believe more than anyone, it's you and your blessings, Guruji, who has got me here. Keep blessing us. Thank you. Now today I give one responsibility. I make him as a Krishna Guruji. Now his duty to heal others. The batch is saying that he's become divine astro healer. Blessings. If I could be 0.1% of what Krishna. Why you are making a doubt on yourself? I am saying yes means yes. Okay? Thank you. You become a Krishna Guruji, and time will say. Thank you. Blessing ji. Thank you very much. मैं उन लोगों से मिलाना कि आपका ब्रेक जो बाहर से काफी लंबी यात्रा तय करके आए. Just I want to say ask one more personality is Charu. She's from Canada. Please, Charu, come. Again, hello to everybody. I do definitely feel blessed to be here. It's such an honor to be here. My journey has not been so small. I think all of us have wanted to grow spiritually, and I definitely wanted to. My journey started by going international. I went to Dr. Brian Weiss, who's written many masters, many lives. Of course, there was something that was missing all throughout. I met Deepak Chopra, attended lots and lots of seminars world over, trying to gain a little bit of knowledge in spirituality. You name it, Theta Healing, hypnotherapy, California Institute of Hypnotherapy. But when I met Guruji, I have never, ever met someone who does not charge, who has no expectations at all from anybody. He is there to heal each and every one of us without any expectations, be it monetary expectations, be it even whatever gratitude we can offer him. He just has this immense desire in his heart to heal. Anybody around the world who has a problem can call him anytime. I'm amazed at his stamina. He picks up the phone. I send him a pranam every day when I can. I've been traveling in India for a month, and after meeting him, I finally feel I've found my Guru. I don't want to go back. I want to stay here. I've been telling him, he says, you're from Canada. I said, no, I'm from India. But I have, honestly, I bow down. I have not come across somebody like Guruji in my journey who says that I am here to create healers. I'm not here as a healer. वाकई में ऐसे कोई नहीं बोलता है. आप पूरी दुनिया घूम लीजिए. मैंने घूमा है. मैं फ्लाइट उठा के पेरू चली गई थी शैमन्स के बीच में सीखने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे ही सबसे बड़े गुरु हैं हमारे कृष्णा गुरुजी, and I'm blessed to be here. It is my honor and a privilege to be given this opportunity to say a few words on the mission and the vision of Guruji.
Guruji came to Malaysia and surprised us all with his selflessness and spontaneous, simple healing with a simple message. Healing lies in us, with us. And this self-empowerment is dependent on selflessness. And it is the life mission and the example of Guruji that we take with us, the simple message that the source of self-empowerment for our own betterment is selflessness. And for that, I am truly grateful. Thank you. So just I want to share, जो 2017 में संकल्प लेके निकला ग्लोबल हीलिंग डे के लिए मलेशिया ने काम किया, रामदास जी, ललिता जी, lot of beautiful team are there. They also committed for the humanity. तो अगर हम अनकंडीशनल प्रेयर के साथ किसी के प्रार्थना करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? यू कांट बिलीव इट. एक 10-5 मिनट का मैं वीडियो और दिखाना चाहूंगा ग्लोबल हीलिंग डे का. पीपल आर गेटिंग देयर विजन. उन लोगों को आंखें मिली. जो नहीं चल सकते थे वो चलने लगे, जो नहीं सुन सकते थे वो सुनने लगे, और जो नहीं बोल सकते थे वो बोलने लगे. मैंने वही क्लेम किया कि मैंने नहीं किया. अगर मेरे हाथ में पावर होता कि अंधे को आंख देने का, तो हिंदुस्तान में कोई आदमी, कहीं विश्व में आदमी अंधा नहीं होता. वो तो उसका जब समय आता है, नियत समय आता है, और उस पल में जब सब चीजें इकट्ठित होती हैं तब वो ऑटोमेटिकली होता है. I am very blessed today due to your presence and all of you. My hand before this day, everybody celebrated my birthday. I now deduct my birthday every day. रात सोता हूँ सांसों को कर तेरे हवाले, तेरी मर्जी है सोता रहने दे या उठा ले. रात सोता हूँ, कहाँ जाता हूँ, हर दिन को एक जन्म नया मान के चलता हूँ, और ये सोच के चलता हूँ कि मैं कहाँ कैसे इन सीमित सांसों में किसी और के लिए सोचूं. ये भाव जगाने वाला वो परमपिता परमेश्वर है, वो मेरा गुरु है, जिसने सिखाया कि सोचना है तो सोच, ऊंचा सोच, छोटा मोटा मत सोच, थिंक बिग. उनके 2 शब्द मेरे दिल में घर करके गए, और आज उनके आशीर्वाद से मैंने एक अपनी ये एक छोटी सा अनकंडीशनल परिवार तैयार किया है, जिनके मन में भी वही मकसद है जो मेरे गुरु का सपना है कि एक तनाव रहित, मुस्कान सहित समाज का निर्माण करना, लेकिन मैं आरोग्यता के साथ शरीर की समस्त व्याधियों को दूर करके करना. थैंक यू वेरी मच टू बिकम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस